guys, my name is Mrunal Panchal and you're watching me on Femina and Grazia's virtual beauty carnival. And today I'm gonna show you how to get your glam game on for summer evening. So let's get started. So we're gonna start with the skincare because it is very initial step and a very important step. And abhi it's summertime in Mumbai and I know how much hot it is. And I'm an oily skin type girl, so I have to make sure that my skin is matte. Let's start with some skin prep. I've just got my shower and let's get ready. I've already toned and everything, but serum and all of that baki hai. So I'm gonna start with this serum and just apply it on my face. This is my skin situation in summer. बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता है. It's so hot. It's like so bad. And I'm just realizing that I'm shooting. This is like my last video in this studio and I'm gonna miss this place so much. I'm gonna start a new chapter in my life. Okay. Done. We're gonna start with some canvas balm because I need to make sure that my skin is properly prepped because skin काफ़ी लोग I've seen like a lot of people that they skip skincare and direct foundation या वैसे लगाते हैं, which is so wrong. Please don't do that if you're one of them. Please. It's a crime. मेरा ऑयली स्किन टाइप है इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ दैट माई स्किन टोन इज ऑलवेज मैट एंड आई ऑलवेज गो फॉर मैट प्राइमर. So I'm gonna go with the matte primer. Just applying near my T-zone, that's it. हम बेस ज़्यादा लाइट रखेंगे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डू द केकी वाला लाइक प्रॉपर वो. We're gonna go with a very light amount of foundation. We'll go with the concealer only. Now let's wait for like 1 minute because primer अच्छे से जब सेट हो जाता है and then आप concealer and बाकी सब प्रोडक्ट्स लगाओगे तब वो जाके और अच्छे से बैठेगा ऑन योर स्किन. सो ऑलवेज मेक श्योर डैट यू गिव थोड़ा बहुत टाइम प्राइमर एंड फाउंडेशन मतलब उसके बीच में बिकॉज थोड़ा टाइम चाहिए रहता है टू सेटल इन. टिल देन विल गोना गो विद द आईब्रोज. माई आईब्रोज आर वेरी बुशी राइट नाउ. ओजी फैंस को मालूम होगा दैट आई यूज टू हैव नो आईब्रोज. नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ आईब्रोज. Which is I'm so thankful. I'm not complaining. I'm just saying. So I'm gonna take this the brow glue and एकदम ऊपर lamination type में करूँगी. My mirror is here, so that's why I'm seeing here ज़्यादा. मुझे वो लैमिनेशन ब्राउज बहुत पसंद है एंड समर्स में वो बहुत ही अच्छा लगता है. लाइक यू हैव अ वेरी बुशी आईब्रोज एंड वो बहुत ही अच्छा दिखता है. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई. नॉट एवरीवन लाइक्स बुशी आईब्रोज लाइक लेमिनेटेड वाला, बट इट लुक्स रियली नाइस once you get used to it. Once you do this, then let it sit for a while and then we're gonna go with the पेंसिल लाइक थोड़ा थोड़ा फिल करना एंड दैट्स इट. ज़्यादा भी नहीं बिकॉज पहले एक ट्रेंड था जहाँ पे सब अपने आईब्रोज इतने डार्क करते थे एंड वो मैंने करा है. लाइक अभी व्हेन आई लुक बैक एंड आई एम लाइक ये मैं क्यों करती थी, बट इट वॉज अ ट्रेंड बैक देन. तो ठीक है. मैं मेकअप इतने दिन बाद कर रही हूँ ना. आई फील सो हैप्पी राइट नाउ. इतने दिन से आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट.
So let me know your plans and your summer vacation. What you guys gonna do? काफ़ी लोग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. All the best for that. Whew. That's it. We're gonna let it sit for a while. Till then we'll start with the concealer. हम थोड़ा dewy base रखते हैं. So for dewy base I'm gonna use this. It's like a dupe for Charlotte Tilbury Hollywood filter, that creamy thing. I'm gonna use this. It's a dupe. Okay, that's it. मैं इतना ही यूज़ कर रही हूँ. Then I'm gonna take my fingers and massage it in. If you have tried that technique, फाउंडेशन हाथ से लगाना और मेरिडिट्स, अपना अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अच्छे से वो वर्क किया. नाउ आई एम लविंग इट. आई मीन पहले स्टार्टिंग में जब मैंने किया था वो, मतलब खुद ही मैंने ऐसा वीडियो कुछ बनाया नहीं, बट मैं ऐसे ही घर में बैठी थी. आई वाज लाइक लेट्स ट्राई, लेट्स सी द हाइप अबाउट दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट द बेस वाज सो गुड. बट उसमें शी टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ. मैं कम प्रोडक्ट्स लेती हूँ, उसको अच्छे से मसाज करती हूँ. एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी स्किन फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है. लाइक गिव्स यू वेरी नाइस नेचुरल फिनिश. मैं अंडर आई पे अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, जस्ट मसाजिंग इट टू माय फेस. ओके, नाउ वी आर गोना गो विद द कंसीलर. taking very tiniest जहाँ पे I feel. Okay, now I'm going to take a beauty blender. थोड़े बहुत acne दिख रहा है, which is I'm okay with. क्योंकि इवनिंग में जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या इट्स अ डिनर और इवेंट, मैं ज़्यादा फाउंडेशन या वगैरह नहीं लगाती. बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक आई नीड टू कीप इट वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशन एंड स्किन टाइप. मतलब ऐसे मुझे बहुत ही लाइट अभी आजकल बहुत पसंद आने लग गया है. लाइक कीप इट वेरी मिनिमल. स्किन में आई शेडो में यू गो क्रेजी. No one is gonna tell you कि eyeshadow ऐसा crazy, but वो skin में I need to make sure that it's very skin finish and not like very cakey and fake लगे. I know I don't know, okay, a lot of you know that I never use a damp or wet beauty blender. कभी भी मेरे लिए वर्क किया ही नहीं है. हमेशा मैं जब भी वो यूज़ करती थी वैसे इट ऑलवेज यूज टू रिमूव माई फाउंडेशन और कंसीलर पूरा निकल जाता था. एंड विद द डैम ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल, लाइक प्रॉपर डैम करके भी इट यूज टू बी लाइक वेरी बैड. बट इसलिए नाउ आई यूज अ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर एंड वर्क्स अमेजिंग फॉर मी. कीपिंग इट वेरी मिनिमल, ओके, बिकॉज समर है. समर के लिए हमें बहुत ही लाइट, जितना लाइट उतना बेटर फॉर योर स्किन, क्योंकि टी जोन ऑयली होने के बहुत चांसेस होते हैं एंड वो अगेन एंड अगेन कौन ही करेगा रीटेस्ट. सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर वेरी मिनिमल पूरा, तो बेस्ट रहेगा. नाउ वी गोना गो विद द कंटूर. ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, just a little bit. You know, I don't even really know where to begin. Okay. Done. Whenever जब भी मैं ऐसे contour place करती हूँ तो मैं ज़्यादा ऊपर blend करती हूँ, like going upwards, giving that proper definition to my skin.
एंड मैं यहाँ पे कॉन्टोर यहाँ पे इसलिए करती हूँ दैट यहाँ पे वो अच्छे से वो टोन देता है, एंड जब भी मैं लिपस्टिक या लिप लाइनर लगाती हूँ तो इट गिव्स मी दैट फुलर लिप्स. One unique, one special. It's giving me that button nose already. Now going with two toned blush because बहुत अच्छा मुझे वो ombre type चाहिए रहता है. So I take this. Okay. Take the other one. I'll place it here. ठीक है. Gonna take the same brush and mixing it very well. हाई पॉइंट्स में मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, नॉट बीच में, बिकॉज उससे मेरा स्किन ड्रैग और बहुत ही, बिकॉज आई हैव अ राउंड शेप पूरा फेस ना, फेस स्ट्रक्चर, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पूरा लिफ्टिंग वे में करूँ. सी हाउ प्रिटी इट इज. Okay. 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 बहुत ज़्यादा डार्क हो गया. इट्स ओके, हम लाइट कर देंगे. ये भी कंसीलर एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ. नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट हियर. आज का ये ट्रेंड बहुत ही आया है ना कि अंडर आई पिंक टोन अंडर आई, सॉरी, वो मुझे भी बहुत पसंद है, बट वो ब्राउन टोन पे इतना अच्छा नहीं लगता है इंडियन स्किन टोन पे. लाइक आई हैव ट्राइड ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव ट्राइड ऑन अदर पीपल एज वेल, तो अच्छा दिख के नहीं आ रहा था. लाइक आई डोंट नो व्हाई. ओके, once this is done, then I'm going with my beauty blender and mixing it together so that it gives me very flawless. Okay, with the powder, setting my under eye because it's a must. It is almost over. I love this powder so much. One unique, one special. That's it. मैं अपना टी जोन ही वो कर रही हूँ बिकॉज वी नीड दैट ग्लो, सो मैं टी जोन पे ही लगा रही हूँ. Done, my eyebrows are done. Now going with the eyeshadow. मैं इस पे ही लगा रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा क्रेजी भी नहीं करना है. Going with this shade right here. लिटरली इतना जुगाड़ मेकअप का. Oh wow. सी वो ऐसा लग रहा है कि वो आई शेडो का पार्ट ही है, बट वो एक्चुअली ब्लश है जो हमने ये पूरे सर्कुलर वे में हमने ब्लेंड किया है लाइक दिस, गिविंग आई शेडो वाइज. बिकॉज हम इवनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं,
So we need some sparkle in our eyes, like on our lids. मैं क्विकली ऑफ कैमरा मस्कारा लगा के आती हूँ. एंड वी आर बैक. एंड मैंने थोड़ा सा विंग किया है लाइनर, एंड मैंने मस्कारा थोड़ा बहुत लगाया है. मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू कीप इट वेरी सटल एंड वेरी इजी टू recreate also. If you are recreating this, please tag me and let me know how was your experience. Okay, I'm gonna go with this freckle and मैं अपने बस दिल को थोड़ा जान दे रही हूँ, मेरा ब्यूटी स्पॉट. That's it. I'm gonna keep it for a while and then उसके ऊपर करके वो कर दूँगी. I'm going with lip liner. पूरा नहीं कर रही हूँ, बस overlining. So must. And going with the gloss. Okay, so this is my final look. Very subtle and flash भी करके फोटो अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा. Not very white वाला फोटोज आएंगे पर अच्छे आएंगे. तो yeah, this is my final look and I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this channel.